बैकपैकिंग ये ट्रिप करने का वो तरीका है जिधर आप कुछ भी ना प्लान करके बहुत ही कम पैसों में एक जगह को घूमते हो। और आदि और मैं क्यों ये बैकपैकिंग ट्रिप कर रहे उसके पीछे भी एक वजह है, एक डॉक्यूमेंट्री। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो हमें धरती की भाषा मतलब लैंग्वेज के बारे में बताने की कोशिश करती है। तो आइडिया ये था कि ट्राइबल्स और आदिवासी लोग के साथ रहकर समझना है कि कैसे ये लोग प्रकृति की भाषा को समझते और इको में रहते, ना कि ईगो में। आदिकाल दैवमगावे आदिये इंबजोदी आहो आदिये इंबजोदी कण पणतेलन्नी कणक तेरी यादे आदिये इंबजोदी याहो आदिये इंबजोदी കണ്ണില്ലാത കുരുടന നേനേ ആദിയേ ഇമ്പജ്യോതി ഓ ആദിയേ ഇമ്പജ്യോതി അത്രേ എല്ലാം അതിരുന്ന अंदर भाई 10 किलोमीटर अंदर रहते हैं बाबा। चलते जाना This is the beauty of language, my friends. बीटबॉक्स करने लग गया ब्रो। लैंग्वेज हर जगह है, ठीक है। अपने जेस्चर्स, अपना फेस इमोशंस। So I want to tell you something that ये जो लाइफ है हमें जो मिली है आज, कि हमारे पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं और देखने के लिए 2 आँखें। हम इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हम इस जगह पर आके आज बैठ सकते हैं और इस खूबसूरती को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे की ये खूबसूरती नहीं है, मतलब पता नहीं, आई कैन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स ये क्या है, और ये जो भी है ये एक इमोशन है, ये वो आवाज़ें हैं। सांस, जीवन, वायु और भाषा। यो check, yeah. We have reached Kodaikanal. The view is absolutely stunning, man. ऐसे ट्रिप्स पे थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है एक्सपीरियंसेस को लेकर, कभी अच्छे तो कभी बुरे। पर एक बात है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। All places are meditating and silence and like new things, new learning. Views from the institutional learning that we do in schools and colleges. Yeah, the different thing. Yes, exactly. The learning is different. That is the essence of life. Yeah. It goes away. Like what I understand is that when a student, like a children, they get admission in school, that is the moment when their touch with nature is lost, because they only study in books and they are never touching the soil. So that touch is lost. You're just understanding, okay, this is global warming, this is CO2, this is oxygen, but in real terms you don't understand. And then you go to college, and after college you again go in that capitalistic approach. Keep working, and then suddenly one day you realize that my air is getting materialistic life. My air is getting natural. bad. Your life is very spiritual and very pure. I'm a lawyer, I'm a practicing high court. Okay. But I am left. Why? I like Mother Nature. Why? Nature is gift. Your body is, your soul is nature gift. Water is nature gift. You have a lot of fear. You are inside lot of fear. Real. Fear and angst keeps Anxiety, fear, and sadness.
That's the main thing. Firstly, remove your status or your state. You are completely filled in your knowledge. No knowledge is the reality. Your map is your own map. Reality is different. The main thing is the universal connect. I connect to moon. I connect to sun. Sun is the supreme power. What you think, so is he. You firstly believe your own soul, not others. I have no dream. At present, this present, not future and past. This moment, I am very happy. I have mainly three things. One is, you are the king. You are the king. Firstly, remove your ego. You are the king, not me. All persons are king. So you know that everyone is God. Yeah. I remove my name. I remove my beliefs. I broke my all. I connect the universe, not others. My birth time is no name, no fear, no anxiety. That's the main thing.